chair this session, and Professor Jatindra Kumar Naikji, Sri Ajay Patnaikji, and Shriman N. Mishraji will present their papers in this session. First, I formally introduce all the participants. The chair, Sri Kanti Bhattacharya, taught English literature at Guwahati University and also at the postgraduate department of comparative literature, Jadavpur University. He was the editor of Sahitya Akademi's Bible of the Journal Indian Literature and also the director of the National Trust in India. His English translations of Mahashrita Devi's Armenian Champak Tree, Sunil Gangopadhyay's The Dreadful Beauty, Srishendu Mukhopadhyay's The Ghost of Gosai Bhavan, and the Bengali translation of U.R. Anandamurthy's short story collection, Surya Buddha, O Ananyagalpo, have been widely acclaimed. In 2012, he was awarded the Best Translator Award from India by the International Board for Books for the Young and felicitated at King's College, London. Currently, he works as the editorial director of Neogi Books, a reputed publishing house based in New Delhi. Professor Jatindra Kumar Naikji is retired as Professor of English, Utkal University. He has co-translated into English Fakir Mohan Senapati's classic Odia novel, Shaman Athar Buddha, and Senapati's autobiography, Atma Jivan Charita. Professor Naik is the co-translator of the autobiography of Manoranjan titled A Dialogue with Memory. He won the Katha Translation Award in 1997 and Hutch Crossover Award Indian Fiction Translation Award in 2004. He was a member of English Advisory Board of Sahitya. Sri Ajay Patnaikji is a retired professor of Hindi. He has contributed a lot to translating masterpieces of Odia literature into Hindi. Professor Patnaikji has translated a few plays written by Manoranjan too. He has received many awards, including Translation Prize of Sahitya Akademi in 2019. Shriman Mishraji is an actor, poet, theatre director, playwright, and former newscaster of Doordarshan. He has been working for the cause of theatre promotion in Odisha for the last 20 years. He has participated in many national level programs like Bharat Ranga Mahotsav and Adi Ranga Mahotsav of National School of Drama, New Delhi. He is the founder secretary of Canvas, a leading theatre organization in the state, and has been organizing Canfest, a national theatre festival, for the last 20 years. He has directed more than 20 plays and has been bestowed many awards and felicitated by different theatre and literary organizations of Odisha. After this formal introduction, I request Nirmala to please open the session. Thank you, Krishna Kimbamne. I would like to welcome all of you back to the first, what is called business session of this Centenary seminar on original dance. I asked myself the question, then why am I here actually? Because you will notice that apart from the official presence of the secretary, vice president, and deputy secretary, there is no other Odia in the business discussion of the seminar. So how do I call it? I am eminently thankful to Sahitya Akademi for inviting me this. I can visualize two reasons. One reason is great Dr. J.P. Das gave me the accolade, Resident Honorary Odia of Delhi. So that may be one reason which has cut some eyes with the Sahitya Akademi. I have a lot of Odia friends, not only in Odisha, but also outside Odisha and also in Delhi. And I was, yes, fortunate enough to be associated in many such discussions regarding Odia literature, regarding the new trends in Odia literature,
teacher in Odia drama. Manoranjan is one of my closest senior friends, you can say. Another reason which I can think of is that I was fortunate in enjoying a very congenial personal relationship with Manoranjan Babu. Sikota will bear me out how we worked together when I was regional secretary of Sahitya Akademi in Calcutta, and he was my convener of the Advisory Board for 5 years. So we worked very closely, and I would like to pat myself on my back, saying that with his association, with his guidance, we could really organize a number of good programs and publish a number of books, good books in Odia from Calcutta. Then when I was in National Book Trust Delhi, as Krishna has already told you, there also I drafted Manoranjan Babu as the advisor in my Odia Advisory Board, and we worked together. And well, again I may, with Jatin's permission, I know what to take a little credit for the fact that this his autobiography, Dialogue with Memory, translated by Arun Kumar Mohanty and Jatin Nayak, was published from National Book Trust under my care. So I was, in manner of speaking, instrumental in bringing it out in National Book Trust, and also August translation again by Jatin. I published when I was regional secretary in Calcutta. I can even give you a very fond information based on my memory that I had the fortune of having a meal at Manoranjan Babu's house in Kota, a good macho bhato meal at his place, and we were together in Mirat when Sikota was also there in a program, and Sikota prepared some very good, aloo parota. And I was quite surprised. I asked her, how would you prepare so much so good aloo parota? It's a North Indian thing. So these are extraneous informations for you. I am only trying to justify to myself why what I am doing here. Now coming to the praise of Manoranjan Babu, you have heard quite a lot in the inaugural session, and a lot of grounds have been covered. Some of the speeches were very exhaustive also, very inclusive also. I read a few of his plays. Many of his plays were available in English translations, at least 7 or 8, out of which 4 plays I read for various reasons during his lifetime. And I fully agree with the description which Srinivas Rao gave at the beginning, and also I think Vijay Babu mentioned in his keynote address that he was an experimental dramatist, and there's Gaurani Babu mentioned that he was perhaps the first modernist dramatist in Odia. So it is a kind of harbinger of modernism in Odia drama, a kind of experimental writer of plays in Odia. He has secured his position very well. And Srijani has been mentioned. Srijani has been mentioned both by Ananda and others. So it was not just a creative impulse, not just creativity in the form of writing plays. He was involved in all the stages of stagecraft, which Satyavrata Rao present here are mentioning stagecraft, all the stages of stagecraft, direction, all the stages of producing a drama. He was deeply involved. So that makes a perfect man in the sense. Sometimes some of us excel in something and we keep ourselves limited to that also. I am a good playwright, I am a good playwright. But here is a man who is a good playwright, involved in, is a good producer of play, is a good director of play. He took interest in the music of play, of presentation of play. So I had endless discussions with him about these things, not necessarily because I am knowledgeable about it, but because I enjoyed his confidence and he liked to talk to me about these issues. With these words, friends, I'll, without much ado, we'll go directly to the
papers. Actually, we have 3 papers and we are behind 45 minutes. So I will leave it to the paper presenters to keep an eye on the clock so that we can finish. If not 1:30, which is the scheduled time, at least 1:45. Krishna is there. Okay. So I'll go by the the sequence which has been presented in the card, and will invite Professor Jaldeep Nayak to the first speaker. Thank you, Dr. Bhattacharya. Ladies and gentlemen, I thank the Sahitya Akademi for giving me this opportunity to say a few words about Manoranjan Das and his autobiography memoirs. So I'll divide my presentation into 2 parts. The first part will relate to anecdotes. And in the second part, I will talk about what I learned from reading the memoirs, because I translated it in collaboration with Dr. Bhavan some 20 years ago. It was published in 2002. So certain ideas crossed my mind when I reread portions of the autobiography. So in the second part of my presentation, I will talk about that. So I'll begin with an anecdote relating to watching the production of Amritasya Putra at Nari Seva Sadan in Cuttack. Mr. Mahapatra talked about that. Way back in 1971. My brother had taken me there and we bought tickets to watch the play, which is something that is unimaginable today in Odisha. The play was directed by Sri Ananta Mahapatra. As a child, I had read Dasa's Bakshi Jagabandhan, but it had not prepared me for a play like Amritasya Putra, which seemed to defy and rupture the prevailing conventions of the well-made realistic play. I first met Manoranjan Das in 1996. I was introduced to him by my friend Arun Mahanti. The two of us went on to translate Dasa's play the 9th of August. The translation of the play was published by Sahitya Akademi. Dr. Nirmal Kanti Bhattacharya, who was the regional director of Sahitya Akademi, Kolkata, took a lot of interest in getting the play published. Getting to know Nirmal was part of the royalty we received from the translation, which was in March. The translation was released in 1998 at Universe in Cuttack. The meeting was attended by Sarada Nayak, Parvati Ghosh and many other luminaries who had achieved distinction in the world, the Odia theatre and cinema. We got close to Manoranjan Das. He was a very affectionate person and a wonderful host. He suggested that we translate into English his memoirs titled Smruti Sangam, a big fat book running into more than 500 pages. Nirmala was the director of MPT at that time, so MPT showed its willingness to publish the translation. It took us more than 2 years to finish translating the memoirs. Looking back, I think we should have abridged the text and made it a little more reader-friendly. Even Manoranjan Das agreed with us after the book was published that it was too long in translation. Nevertheless, translating the memoirs introduced to us a fascinating world presented through the perspective of someone who not only lived in it, but someone who enriched and transformed it. It not only recounted an eventful life, a checkered career, it also provided insights into the ways in which theatre evolved in Odisha. Very few playwrights have left accounts of their lives and times in Odisha. They include Vaishnav Pani, Kalicharan Patnaik, Gopal Chotray, Prafulla Ratha, Kartik Ghosh and Bhajakishwar Patnaik. But generally speaking, we get more information about their lives than on the changing world of theatre in Odisha. Manoranjan Das's memoirs can be read as a history of the growth and perhaps decay of modern Odia theatre. As we trace the trajectory of his career as a playwright, as a cultural administrator, as a producer at All India Radio, as a director, our understanding of the changing world of performing arts in Odisha get deepened and broadened. How is his memoir different from the ones I have just mentioned? There is no doubt that Pani, Kalicharan
Kalicharan Patnaik, Gopal Chokrai provide useful and valuable perspectives on the changes overtaking Odia theatre. Manoranjan Das was painfully aware of the absence of an intellectual dimension in Odia drama. Already in the 1940s, at the height of the freedom struggle, audiences in Odisha were turning away from mere entertainment. Dinabandhu Das, the famous Odia comedian, refers to this change taking place in people's sensibility in his autobiography. Manoranjan Das himself talks about his own desire to expand his own intellectual horizon as a young student in Rabindra college. In his memoirs, he tells us how Surendra Mahato, the famous novelist, his contemporary in the college, took him to Professor P.S. Sundaram, a legendary professor of English, and asked him to give young Manoranjan a list of Western plays he should read. This exposure to the latest trends in modern drama perhaps led him to move away from the kind of plays he was writing in the early phase of his career as a dramatist. Plays which had earned him considerable popularity as a playwright. Already we have heard eminent speakers spoke about Boxy Jagabandhu, Akademi, Bhavan, and all these plays which made him very famous in the beginning of his career. Now he began experimenting with new forms and techniques, new ways of expression, and the failure of communication among human beings. These plays explore the unplumbed depths of human psyche. He inaugurated the tradition of writing absurd drama in Odisha and established the possibilities of innovation. His place as a pioneer remains absolutely secure. But he now confronted a dilemma. It's the awareness of this dilemma that lends his memoirs such poignancy and depth. He reads and appreciates the plays of Brecht. He visits the Soviet Union and visits the house of Stanisław Lasky, the very famous director. He realizes how experiments can transform the relationship between the playwright and his audience. But at the same time, he is painfully aware that audiences were drifting away from modern experimental plays. Odia plays were no longer commercially viable. There was a time when a play could run for 100 days. Bhavan by Kalicharan Patnaik ran for 100 days before independence. But this is unimaginable today, even during Manoranjan Das's time. Amateurs, however inspired, could no longer sustain it, and their efforts, however admirable, were sporadic. In this context, his last play, Nandika Keshari, assumes great significance. Here, he once more returns to a historical theme like Boxy Jagabandhu and explores it with panache and brilliance. Perhaps his experience as a producer at All India Radio was particularly useful here. Those of you who take the trouble of going through his memoirs would learn that it was Manoranjan Das who persuaded the eminent playwright Gopal Chokrai to adapt Vaishnav Pane's enormously popular musical plays like Ramdas Sabha. At first, Gopal Chokrai was extremely averse to undertake this arduous task. But Manoranjan Das kept relentlessly pestering him, and Gopal Chokrai finally gave in. The rest is history. The radio adaptations of Vaishnav Pane's plays achieved unprecedented popularity and continued to remain immensely popular. I suspect the unexpected success of this endeavor prompted Manoranjan Das to blend folk elements with modernist experiments in theatre. The splendid outcome of this unique and unusual experiment was Nandika Keshari. It's a great pity that Manoranjan Das did build on the success of this experiment, but the play brilliantly shows how inheritance can enrich and fertilize innovation and rescue the latter from the terrible fate of becoming rootless and alienated. I flipped through the translation of Smriti Samla about 20 years after it was published.
rereading portions of it made me aware of these great possibilities, lost opportunities which remain unachieved or unactualized. Let's hope young playwrights will observe vital lessons from Manoranjan Das's unique leadership. Thank you very much. I thought the same system will continue but thank you for a very precise, concise but very precise observation. Maybe if we have a little time later on, we'll raise some issues. And for example, the question comes to my mind, which I don't want you to answer right away, but maybe later at time like this. That was in Odia drama also that division between people's theatre, group theatre, and commercial theatre. Yeah. You mentioned the drama running for 1,000 days. So did group theatre achieve that, or it was the domain of the commercial theatre? But we'll come to that later on. May I now invite Professor Ajay Patnaik to kindly make his presentation. We also work together, Ajay Patnaik and I work together through letters and mails and telephones, but met for the first time. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर हेमकांति भट्टाचार्य जी, जिनके नेतृत्व में हमने यूट्यूब में कुछ काम किया है, आज इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर जतिन नायक, गौरव बाबू, विजय बाबू और सुधीर सज्जन मंडली, मेरे साथ मनोरंजन दास का जो संबंध है उसके गवाह हैं विजय सतपथी, जो उन्हें लेकर के मेरे पास आए थे और वो चाहते थे कि मैं मंदिका कैसेट का हिंदी अनुवाद करूं, और उनके मित्र थे दिनों ज्ञानपीठ में, उन्होंने कहा है कि उसको सबमिट करो। उसी प्रकार से हमने सबमिट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि छोटा हो जाएगा, इसमें अमृत पुत्र को उन्होंने जोड़ने को कहा, हमने उसका भी अनुवाद किया। लेकिन उनके मित्र के साथ वो बात करते थे और किसी से बात नहीं करते थे, इसलिए शायद संभवतः डिप्टी सेक्रेटरी को कुछ ऐसा लगा। जैसे ही वो रिटायर हो गए, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और उनसे कुछ कहा सुनी हो गई, तो ले आए उसको। और मुझे एक बात फोन करके बताया मनोरंजन जी ने कि इसे केंद्र साहित्य अकादमी में रजिस्टर्ड हो गया है, ये आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, विजय जी से हमने कई बार पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमने आवेदन किया उड़ीसा साहित्य अकादमी में और पांडुलिपि को वहाँ हमने जमा किया है, 6 या 8 महीने हो गए, पत्र तक नहीं मिला अभी तक। इसलिए क्या होता है, उसका नसीब क्या होता है। और अमृत पुत्र को हमने एक प्राइवेट कंपनी में देते थे। एनीवे मित्रों, मुझे जो बताया गया है भी इसमें दिया गया है टॉपिक, ये मान्यवर सदस्यों ने ये टॉपिक सजेस्ट किया, मनोरंजन दास और मोहन राकेश के नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन। हमने इसको यूं किया, मनोरंजन एवं मोहन राकेश के नाटकों में समकालीन जीवन संघर्ष तथा अंतर्बंध, थोड़ा सा बैकग्राउंड देकर के हमने इस पर बात की है। भारतीय साहित्य में श्रव्य काव्य के रूप में नाटक की प्राचीनता एवं लोकप्रियता अनस्वीकार्य है। प्रारंभिक पर्याय में लगभग सभी प्रांतीय भाषाओं के नाटक पारंपरिक रूप से पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक विषय वस्तु को लेकर रचा जाता रहा। इस दृष्टि से ओडिया नाटक का एक दौर सिर्फ लीला, स्वांग, गीति नाटक, लोक नाटक आदि को लेकर चला, जो प्राय पौराणिक प्रसंगों पर आधारित था। मंच कला के साथ नाटकीय तत्वों को लेकर जो नाटक सामने आए, उनमें सर्वप्रथम आधुनिक एवं समाज सचेतन नाटक के रूप में जगमोहन लाला के बाबाजी 1877 में नाम आता है। फिर एक जबरदस्त प्रतिभाशाली नाटककार के रूप में
ऐतिहासिक नाटक कांची कावेरी 1880 को लेकर रामशंकर राय इस क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। यद्यपि उन्होंने कई और पौराणिक नाटक एवं प्रहसनों की रचना की, पर कांची कावेरी के साथ ही वे उड़िया नाट्य परंपरा में स्थापित हो गए। इसी परंपरा में भिखारी चरण पटनायक, गोदावरी सुरेश्वर एवं अश्विनी कुमार घोष ने भी अपनी अपनी नाट्य कृतियों से उड़िया नाटक को विकसित किया। यद्यपि नाट्य कला की दृष्टि से इनका विशेष योगदान नहीं रहा। उड़िया नाटक की इसी पृष्ठभूमि में कालीचरण पटनायक का आविर्भाव एक स्वर्णिम अध्याय का उन्मोचन करता है। कविचंद्र के नाम से मशहूर कालीचरण स्वयं शास्त्रीय संगीत में निष्णात थे। एक कवि होने के साथ साथ रासलीलाकार के रूप में काफी चर्चित थे। फिर आधुनिक नाटक की दिशा में कलम चलाकर अपनी शोध परिवर्तन भाव जैसे जिनका जिक्र किया अभी जतिन जी ने, जैसे नाटकों की रचना कर एक ओर जहाँ सामाजिक क्रांति मचा दी, वहाँ दूसरी ओर जयदेव, चक्री, अतिबड़ी जगन्नाथ दास, सारला दास आदि सांस्कृतिक नाटकों की रचना कर मानव संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण पैदा कर दिया। फिर अभियान जैसा ऐतिहासिक नाटक रचकर राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानियों में मानव ऊर्जा भर दी। विषय और शिल्प की दृष्टि से कालीचरण स्वतंत्रोत्तर काल तक उड़िया नाटक में छाए रहे। इस दौरान कार्तिक कुमार घोष, रामचंद्र मिश्र, भंग किशोर पटनायक, गोपाल चोटराय, प्राणबंधु कर्ण महापात्र, वसंत महापात्र आदि नाटककार हुए, जिन्होंने विषय वैविध्य के साथ साथ शैली में भी परिवर्तन लाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कहीं न कहीं कालीचरण का प्रभाव बना रहा। ऐसे समय में जब सब भारतीय स्तर पर नवनाट्य आंदोलन की शंखर ध्वनि सुनाई दी, उड़िया नाटक में भी उसकी प्रतिध्वनि पसर गई। विषय और शैली में वैज्ञानिक परिवर्तन के साथ मंच कला में भी अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। चरित्रांकन में मनस्तात्विक विश्लेषण के साथ प्रतीकात्मक संवाद के जरिए तीव्रता लाने के अभिनव प्रयास हुए। इसी मनस्थिति को लेकर उड़िया नाटक के महानायक मनोरंजन ने प्रवेश किया। हिंदी नाटक की परंपरा में अगर मोहन राकेश के पदार्पण की बात करें तो भारत के अन्य प्रांतों की भांति यहाँ पर भी सादृश्य के दर्शन होंगे। अन्य भाषा की तरह हिंदी में भी नाटक अपने पूर्ववर्ती रामलीला, रासलीला, हनुमान लीला, नौटंकी, प्रहसन, भांडों के खेल आदि से प्रभावित है। लेकिन पहली बार भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने मार्जिन की संपूर्ण नाट्य रचना पर बल दिया। उन्होंने संस्कृत फारसी रंगमंच की विशिष्टता में प्रयुक्त पाश्चात्य नाट्य कला से अपनी स्वतंत्र नाट्य कला का निर्माण किया। उनके द्वारा रचित श्री चंद्रावली नाटिका, नील देवी, सती प्रताप, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि ने हिंदी नाटक रचनाओं को मजबूती से स्थापित कर दिया। आगे श्रीनिवास दास, किशोरलाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि नाटककारों पर भारतीय का प्रभाव बना रहा। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी नाटक के ढेर सारे अनुवाद हुए, पर भारतीय के बाद लंबे अरसे तक इस नाटक के क्षेत्र में किसी उल्लेखनीय कृतित्व के दर्शन नहीं हुए। सन 1918 में एक बलिष्ठ प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव हुआ, जो महान कवि होने के साथ साथ विशिष्ट नाटककार भी थे। उनकी कतिपय प्राथमिक नाट्य कृतियों में परिपक्वता नजर नहीं आई, लेकिन आगे चलकर इतिहास से विशेष कारण विशाख, जन्मेजय का नायक, राजश्री, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त गोस्वामी जैसे नाटकों की रचना की और हिंदी नाटकों को शिखर तक पहुंचा दिया। ऐतिहासिक कथा वस्तु के जरिए प्रसाद जी न केवल गड़े मुद्दे उखाड़ रहे थे, उनको प्रेमचंद ने ये कमेंट किया था, गड़े मुद्दे उखाड़ रहे थे, बल्कि गुप्त जैसे स्वर्णकाल के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न के जरिए समकालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों में जोश भर रहे थे। अपने नाटकों में प्राच्य और पाश्चात्य नाट्य शैली का सुंदर समन्वय प्रसाद जी की प्रमुख विशेषता रही है। उनके समसामयिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, अंबिका दत्त त्रिपाठी, रामचंद्र त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट आदि के नाम लिए जा सकते हैं। परिमाण की दृष्टि से उन्होंने पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की भरमार कर दी, लेकिन प्रसाद जी से आगे निकल नहीं सके। अपने अकेले लक्ष्मीनारायण मिश्र ने लीक से हटकर सामाजिक समस्याओं को उठाया। विश्व प्रसिद्ध इब्सन और शॉ से प्रभावित होकर समस्या नाटकों के जरिए इस युग को एक नया आयाम दिया। सन 1935 के बाद उपेंद्र नाथ ऐसे पहले नाटककार हुए जिन्होंने हिंदी नाटकों को रोमांस
साथ जोड़ा। जय जय पराजय से लेकर अनुरोधी अभिगति आदि विषय और शिल्प और मंच कौशल के साथ आधुनिक यथार्थ को जोड़ा। विष्णु प्रहाकर के डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर के पुराण, रविंद्र भारती के अंधायु, लक्ष्मीनारायण लाल के मादा कैरेक्टर्स आदि ऐसे नाटक है जिन्होंने आधुनिक भाव को ऊंचाई तक ले जाकर हिंदी साहित्य में आधुनिकता की क्रांति पैदा कर दी। ऐसी ही पृष्ठभूमि में आधुनिक व्यक्ति की विधाग्रस्त मनस्थिति के सफल चित्रकार के रूप में अपनी बारीकियों को लेकर हिंदी नाट्य जगत में महान कथाकार और नाटककार मोहन राकेश अवतीर्ण हुए। लेकिन मनोरंजन दास की तरह उनका नाट्य संसार विभिन्न समय के विषय वैविध्य को लेकर नहीं रचे गए, बल्कि समकालीन सामाजिक एवं मानसिक समस्याओं पर केंद्रित हैं। मनोरंजन के एकांकियों के अतिरिक्त लगभग 15 नाटकों की रचना की मनोरंजन ने एकांकियों के अतिरिक्त लगभग 15 नाटकों की रचना की, जिनमें आगामी अगस्त 9 कवि बख्शी दगवंत बनहंसी, अरण्य फसल, अमृत से पुत्र, कठोरा, शब्दलिपि, क्रांत प्रजापति, वितर्कित पुराण एवं नंदिका केसरी बहुचर्चित हैं। इनमें कई ऐतिहासिक हैं, कई राजनीतिक चेतना पर आधारित एवं शेष मनस्तात्विक हैं। लेकिन मोहन राकेश ने एकांकियों के अलावा मात्र 3 नाटकों की रचना की और विश्व भर में आदृत हुए। उनका एक चौथा अधूरा नाटक भी है, आशा है एक दिन, लहरों के राजवंश। आधे अधूरे के बाद चौथा है पैर तले की जमीन, जिसे दिवंगत होने के उपरांत उनके अंतरंग मित्र कथाकार कमलेश्वर ने पूरा किया। संभवतः अपने दीर्घ जीवन और लंबे नाट्य अनुभव के कारण विषय और शैलीगत वैविध्य को लेकर मनोरंजन आज भी चर्चित है और आगे भी दीर्घ काल तक चर्चे में रहेंगी। फिर सारी जिंदगी आकाशवाणी और भारतीय संगीत नाटक अकादमी के नाट्य लेखन, निर्देशन एवं प्रायोजन से जुड़े रहने के कारण उसी में गोते लगाते रहे। अपने अथक परिश्रम, अध्ययन, चिंतन, मनन से व्यापकता के साथ गहराई का मणिकांचन सहयोग उनके नाटकों में दृष्टिगत होता है। एक तरफ वे उपनिषदीय दर्शन, गांधी दर्शन, इतिहास, लोक तत्ववादी से प्रभावित हैं, तो दूसरी तरफ शास्त्रीय काव्यों के स्थितिवादी दर्शन, प्रायः मनस्तत्व तथा इब्सन, बेकेट, स्टीनबर्ग, यूनेस्को आदि की प्रतीकात्मकता से प्रभावित हैं। मोहन राकेश मनोरंजन से 2 साल बाद पैदा हुए और 38 साल पहले जन्म से 50 साल की स्वल्पावधि में भी नाटक एवं एकांकी के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, आलोचना, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र आदि विविध विधाओं में कलम चलाई और सभी में सफल भी हुए। संभवतः यही कारण है कि केवल 3 नाटकों का निर्माण कर उन्होंने भारतीय एवं विदेशी नाट्य जगत में भी अपनी स्थिति जाहिर कर दी। आज समाज में व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्र में व वर्गों में विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। हर मोड़ पर विसंगतिपूर्ण स्थिति से गुजरना उसकी व्यवस्था है। राकेश जी की कृतियों में साधारण से लेकर ऊंचे वर्ग के जीवन का चित्र परिलक्षित होता है, मगर खासकर मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं को रूपायित करना उनका उद्देश्य रहा है। उनके नाटकों में समस्या का जन्म तभी होता है जब व्यक्ति और परिवेश के मध्य द्वंद्व का उद्गम होता है। राकेश जी व्यक्ति और परिवेश के संबंध को निबिड़ मानते हैं। परिवेश से जुड़ने तथा उखड़ने के द्वंद्व में निर्णय न कर पाने की स्थिति में वह स्वयं को पीड़े में बंद पक्षी की तरह कैद पाता है। भीषण पीड़ा, संकट की स्थिति को झेलता है और अपनी पहचान उसके लिए कुशाग्र हो जाता है। आषाढ़ का एक दिन के कालिदास, लहरों के राजहंस के नंद, आधे अधूरे के महेंद्र नाथ में हम समकालीन जिंदगी की त्रासदी से साक्षात्कार करते हैं। दरअसल मोहन राकेश ने पहले संस्कृत एवं फिर हिंदी से एमए किया, लेकिन वे पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इस दिशा में संस्कृति, इस देश की संस्कृति और यहाँ के इतिहास का गहन अध्ययन किया। इसलिए विदेशी प्रभाव तो नहीं लिया, पर विदेशियों ने इनके नाटकों से प्रभावित होकर लंदन, अमेरिका आदि कई देशों में उनके अनुवाद और मंचन किए। कवि सम्राट भंजर, बख्शी दगवंत और नंदिका केसरी तीनों इतिहास पर आधारित होने पर भी किंवदंती एवं लोक कथाओं के प्रभाव से भी अछूते नहीं है। बनहंसी न केवल उड़िया में बल्कि समूचे भारतीय नाट्य साहित्य में एक अभिनव परिकल्पना है। समकालीन मानव की मानसिक स्थिति का विश्लेषण ही नाटक की कथा वस्तु है। घटना और चरित्र इसमें नहीं के बराबर है,
मनस्तात्मकता एवं प्रतीकात्मकता इसकी विशेषता है। इसमें सांकेतिक सेटिंग एवं स्थायी दृश्य की परिकल्पना की गई है। मन की अदृश्य गहराई का संकेत स्वरूप काली दीवार और समयहीनता का प्रतीक सुई विहीन दीवार घड़ी की सेटिंग है। एक दुखांत नाटक होने पर भी बनहंसी ने समकालीन जीवन की यांत्रिक गतानुगतिकता, अगंभीरता, अपूर्णता एवं लक्ष्यहीनता पर तीखा व्यंग किया है। प्रेम जनित निसंगता एवं अतृप्त यौनापेक्षा की व्यर्थता से निर्मित मनोरंजन के अंतर्मानस का ऊहापोह अरण्य पसंद में अभिव्यक्त है। जाहिर है कि परंपरा से हटकर कथा मुक्त विषय से शैली ही सब कुछ है। अतः बिंब प्रधान एवं प्रतीकात्मक होने पर अंशलग्न तथा शब्द संकुचित संवाद से पाठक को भयंकर मानसिक विस्फोट का सामना करना पड़ा है। अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि मनोरंजन के तमाम नाट्य कृतियों में मानव की आत्म अन्वेषा एवं आत्म प्रकाश संबंधित समस्याओं की अभिव्यक्ति हुई है। आत्मचेतना के द्वैत बोध से ही मानसिक संघर्ष का उद्भव हुआ है। व्यक्ति सत्ता के अन्वेषा एवं निर्माण हेतु उनके तमाम नाटक मानव एक अंतर यात्रा है। मानव के अवचेतन में जमे जालों का सफाया करते करते मानव सारा का सारा मन ही ढह गया है। विस्फोरण से विपर्यस्त हो जाती है अंतर्भूमि। चौकीदार के अलावा अरण्य पसंद में कुल 5 चरित्र हैं, 3 पुरुष और 2 नारी। बर्मा, दिल्ली, सुब्रत, संग्राम, बेबी सभी एक दूसरे से परिचित होते हुए भी अपरिचित हैं। अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार नाटक में जीवन की व्यर्थता, लक्ष्यहीनता, विचित्रता एवं निर्जनता दर्शाई गई है। घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, हिंसा, यौन खिलगा आदि प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित हैं। एक नारी का गैर पुरुष की उंगली चूमना, बकरी का चीखना आदि यौन विभिन्नता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। बनहंसी और अरण्य पसंद से अलग अमूल्येश्वर पुत्र में मनोरंजन मानव की असफलता, असहायता एवं व्यर्थता के लिए भय को ही जिम्मेदार माना है। यह भय है समाज, परंपरा, मानव निर्मित रीति नियम, श्रृंखला एवं पारंपरिक घृणा, संदेह तथा अविश्वास का भय। इस भय के बंधन से मुक्त होने से ही जीवन की पूर्णता का एहसास होगा। अतः हमारे युवा वर्ग को चाहिए कि वे भय, शंका, संशय, घृणा, ईर्ष्या, हिंसा एवं अविश्वास पर प्रतिष्ठित समाज को जड़ से उखाड़ने के इसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट या प्रतिष्ठा विरोधी अस्तित्ववादी मानसिकता के आधार पर नाटक का कलेवर निर्मित हुआ है। विश्रामागार से कप प्लेट से लेकर प्रेम तक का ध्वंस उनका ध्येय है। गतानुगतिकता एवं प्रतिक्रियाशीलता का प्रतीक प्रेम का प्रतिरोध कर खुद पीस जाने की संभावना है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इससे सब कुछ ध्वंस हो जाने पर भी फिर से व्यक्ति स्वाधीनता पर केंद्रित नई सृष्टि का निर्माण होगा। बनहंसी और अरण्य पसंद की भांति काठगोड़ा में भी नाटककार ने अभिव्यक्तिवादी नाट्य शैली को अपनाया है। इसमें भी समकालीन जनजीवन की व्यर्थता, निष्फलता एवं दुर्निवार यंत्रणा का मार्मिक चित्र प्रदान किया गया है। पति पत्नी के बीच तनाव, पीड़ा एवं अत्याचार का चित्र 2 दंपतियों को लेकर नाटककार ने प्रदर्शित किया है। एक में पत्नी उत्पीड़न का शिकार है तो दूसरे में पति। पीड़ा मुक्त होने के लिए दोनों दंपतियों ने अपने अपने साथियों के हाथ छोड़ दिए। नतीजा यह हुआ कि बंधन की पीड़ा से अधिक मुक्ति की पीड़ा सताने लगी। आखिर पीड़ा को ही जीवन का एकमात्र सत्य स्वीकार किया गया। इसमें नाटककार ने संक्षिप्त, शाणित, प्रतीकात्मक एवं गीतात्मक संवाद के जरिए मानव की सत्ता के संधान को ही मुख्य उपदिव्य माना है। इन प्रमुख नाटकों के अतिरिक्त मनोरंजन के अववाहिका, स्वप्न, स्वतंलिपि, उर्मी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सभी में पारंपरिक ढंग से भिन्न गहरी मनस्तात्विकता एवं तीव्र मननशीलता के स्वाख्यात स्पष्ट हैं, जो उन्हें उद्भटता एवं पाश्चात्य स्थितिवादी दर्शन का अनुगामी करार देता है। नव्य नाट्य आंदोलन के पुरोधा के रूप में ओडिया नाटक की परंपरा में सदैव आदर के साथ स्मरण किए जाएंगे। मोहन राकेश का पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन इतिहास के पर्यावरण का आभास देता हुआ भी आधुनिक है। इसमें इतिहास के हल्के छिलके तो हैं,
कहीं आधुनिक मानस के द्वंद्व परिद्वंद्व संघर्षों का संयोजन है। यहाँ ऐतिहासिक धरातल पर आधुनिक नरनारी के संबंधों की जटिलता को आधुनिक भावुकतापूर्ण परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है। प्रस्तुत नाटक में महत्वाकांक्षी सृजनशील प्रतिभा से संपन्न कालिदास घोर अस्तित्व संकट को झेलता हुआ तीव्र प्रशासनिक व्यवस्था की चपेट में आ जाता है। नाटक के पहले अंक में तो कालिदास अत्यंत संवेदनशील, भावुक, स्वाभिमानी, सहानुभूतिशील प्रतीत होता है, मगर अति महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति तथा सत्ता एवं ऐश्वर्य के मोह में वह स्वार्थी, आत्मकेंद्रित तथा संकुचित मनोवृत्ति का बन जाता है। वह दोहरी जिंदगी जीता है, न तो पशुपात की अवस्था में वह प्रसन्न था और न ही सम्मानित कवि तथा प्रशासक के रूप में राजकीय वातावरण में खुद को एडजस्ट कर पाता है। अपने परिवेश से उखड़ने का एहसास उसमें अंत तक बना रहता है। जाहिर है कि हमारी प्रशासन की व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और कालिदास जैसे असाधारण सृजनात्मक बौद्धिक प्रतिभाएं इस व्यवस्था की चपेट में आकर दिग्भ्रमित हो जाती हैं। अपने ही अंदर छटपटाते उठते हुए वे न तो व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा पाती हैं, न त्यागने में समर्थ होती हैं। सिर्फ अकेले निर्वासन की स्थिति को भोगने पर विवश हो जाती है। कालिदास की गायबता, दुर्बलता, पलायनवादिता आज के युग की विसंगत परिवेश का उद्घाटन करती है। इसमें मल्लिका जैसी निरीह कोमल नारियां उपेक्षित होकर रह जाती हैं। समय के बहाव में मल्लिका विलोम जैसे खल प्रकृति के व्यक्ति की पत्नी उसके बच्चे की मां बन जाती है, पर फिर भी भावनात्मक स्तर पर कालिदास के लौटने पर मल्लिका के पैर बाहर की ओर बढ़कर भी थम से जाते हैं, क्योंकि इच्छा और समय में तीव्र विषमता व विसंगति आ गई है। मोहनराज का दूसरा नाटक लहरों के राजहंस बौद्धकालीन ऐतिहासिक कथानक पर आधारित होते हुए भी भोग वैराग्य, पार्थिव अपार्थिव, प्रवृत्ति निवृत्ति, अस्तित्व अनस्तित्व के चिरंतन द्वंद्व को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उपस्थापित करता है। प्रस्तुत नाटक नंद, सुंदरी और बुद्ध के चरित्र पर केंद्रित है। राकेश का यह नाटक लहरों के राजहंस अश्वघोष के सौंदर्यमय काव्य पर आधारित होते हुए भी नाटककार ने यहाँ इतिहास के साये में आधुनिक भावबोध को निरूपित किया है। उन्होंने नंद, सुंदरी जैसे ऐतिहासिक चरित्रों को आश्रय बनाकर आज के विघाग्रस्त मानसिकता में जी रहे मानव निर्णय अनिर्णय की स्थिति से उपजे पीड़ा, घुटन, संतरास, अकेलेपन, कूद, बेचैनी, विवस्था एवं असमर्थता के साथ निरंतर आंतरिक संघर्ष को झेलता हुआ मुक्ति की तलाश में भटकता रहता है। मृग की क्रांति जनित मृत्यु आधुनिक जीवन की यांत्रिकता से उत्पन्न कूद और थकान से घिरे आज के मानव की नियति को व्यक्त करता है। बुद्ध की चेतना से अभिभूत नंद के हाथ से दर्पण का गिर कर टूट जाना, जहाँ उसके विचलित अस्थिर मन को द्योतित करता है, वहाँ रूपगर्भिता सुंदरी का दर्द खंडित हो जाने का संकेत भी देता है। अपनी विसंगतियों से पीड़ित स्त्री पुरुष एक अधूरे को न समझ पाने की व्यवस्था को नाटक ने आज के परिप्रेक्ष्य में उजागर किया है। मोहनराज का तीसरा नाटक आधे अधूरे समकालीन जीवन बोध का उद्घाटन करता है। उनके पिछले दो नाटकों की भांति इसमें रोमांटिक भावबोध लेस मात्र भी नहीं है। नाटक के सभी पात्र अधूरेपन की दशा को झेलते हुए पाए जाते हैं। नाटक की कथा वस्तु एक ऐसे महानगरीय मध्यवर्गीय परिवार की कथा कहती है जो स्तरीकरण की दौड़ में हाँफता हुआ निम्न मध्यवित्त श्रेणी में जुड़ गया है। यह अंतिम है। नाटक में 5 सदस्यों का एक परिवार है। पति महेंद्रनाथ, पत्नी सावित्री, लड़का अशोक, 2 बेटियां बिन्नी और गिन्नी। हर पात्र अपने जीवन से असंतुष्ट है और पूर्णता की तलाश में हाथ पैर मारता हुआ अपने को आधा अधूरा ही पाता है। पूरा नाटक शुरू से अंत तक विसंगतियों और विषमताओं से भरा हुआ है। 40 साल की सावित्री अपने चेहरे पर जवानी की चमक और चाह लिए एक नौकरी पेशा स्त्री है जो महत्वाकांक्षी और अहंकारी भी है। महेंद्रनाथ को खुद पसंद करके शादी करने पर भी 2 साल बाद उससे उठ जाती है। कभी अच्छे खासे बिजनेसमैन रहने वाले महेंद्रनाथ अपने ठाक माक और बिल्कुल खर्ची की वजह से आज खाली हाथ हैं और बीवी की कमाई पर निर्भर है। परिणामतः वे अपने ही घर में अजनबीपन को झेलते हैं, अपमान सहते हैं, प्रताड़ित होते हैं। सावित्री तो उन्हें घर घुसरा, नासुकरा, रबड़ स्टैम्प,
आराम तलब कीड़ा जाने क्या क्या करती है। सावित्री शिवकी तो जगमोहन सिंघानिया जुनेजा कितनी पुरुषों के साथ नाजायज संबंध रखती है। अंत में संपूर्ण पुरुष के तलाश में शेष जिंदगी जगमोहन के साथ बिताने का निर्णय लेकर घर से निकल जाती है, लेकिन उसकी ढलती उम्र को देखकर जगमोहन अपना हाथ खींच लेता है। अतः सावित्री को फिर से उस मनहूस घर में लौटना पड़ता है। महेंद्र नाथ भी अपमानित होकर घर छोड़ देता है और 3-4 दिन चक्कर लगाने के बाद मजबूरन फिर से घर में वापस आ जाता है। महेंद्र नाथ और सावित्री के विघटनशील दाम्पत्य जीवन के तनावपूर्ण असंगत संबंधों की व्यर्थता ने बच्चों के जीवन को विकृतियों से भर दिया है। बच्चे आवारापन के शिकार होकर चरित्रहीन बनते जा रहे हैं। बड़ी लड़की बिनी माँ के प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर लेती है, मगर उसका भी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। बिनी अपने अहम के कारण टूटती रहती है। बड़ा लड़का अशोक अपने जीवन में नैराश्य का शिकार है। उसे न घर से लगाव है, न ही अपनी जिंदगी से। उसके चेहरे और उसकी हंसी में एक खास किस्म की कड़वाहट भरी हुई। वह घर के दमघोट वातावरण से मुक्ति की तलाश में है। छोटी लड़की इन्नी 13 साल की उम्र में बदतमीज बदजबान हो गई है। घर के किसी से भी उसे कोई लगाव नहीं है। हमेशा आक्रोश में रहती है और यौन विषय बातों में रुचि लेती है। आर्थिक विषमता के कारण हमारा मध्यवर्गीय जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राकेश ने इस नाटक में महानगरीय मध्यवर्गीय जीवन की विसंगति से उत्पन्न चरमराई जीवन शैली का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर अपने अपने ढंग से उड़िया नाटककार मनोरंजन दास एवं हिंदी नाटककार मोहन राकेश ने समकालीन जीवन की पीड़ा, तनाव, संतरास तथा अंतर्द्वंद को बड़ी बारीकी से उकेरा है। दोनों मौलिक चिंतक एवं नाट्य शिल्पी दीर्घकाल तक न उड़िया और हिंदी नाटक को बल्कि समूचे भारतीय नाट्य साहित्य का मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पटनायक जी। हमने बहुत गहराई से कम 3 नाटक मनोहंसी, काटाघोड़ा और अरुण फसल का विश्लेषण किया और मोहन राकेश के नाट्य क्रिया के साथ कंपैरिजन हुई आउटपुट ऑफ मनोरंजन दास। But I must confess here that while I am extremely influenced and extremely taken on by the way in which you analyze the content of Manoranjan Das's plays, so far as comparison between Mohan Rakesh and Manoranjan Das is concerned, I would find more dissimilarities than similarities. Apart from the fact that there was solitude, there was melancholy, there was ennui, the things that you mentioned. ये सब कॉमन है, लेकिन इसके अलावा शैली में कॉमननेस कम ही नज़र में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है मनोरंजन बाबू, as far as I can see, whatever they have read, as Jatin mentioned that in Nandika case he did an experiment with the musical aspect of the play, but I don't think he has ever gone to history or he has ever gone to mythology or these aspects. But Mohan Rakesh's most important play, Ashar Ka Ek Din, is with the meat of Kalidas. Anyway, but then it comes of the modern theories of comparative literature, finding of dissimilarities is more important than finding of similarities. So that way, definitely does well. Thank you very much. I will now request our last speaker, Shriman Mishra Ji. Thank you very much. Good afternoon. I don't feel that I will have an audio problem at this because I am a platform. The learned chairperson, the knowledgeous personality of Indian literature and the former director of National Book Trust
Mr. Nirmal Kanti Bhattacharya. As a chairperson of this panel, he has already warned that to minimize within a short span. Actually, I was editing the script which I have prepared. In between, the talks by Mr. Professor Jatin and Mr. Ajay Kumar, who I was carefully listening. I was in a dilemma how I will maintain your time stream. Don't be conscious of it. Thank you for your generosity. Many of the occasions, like show, it resounds repetitive and time is running out. And my father has also warned not to do any intellectual session while you are hungry. I hope after some time you will do it. So I will concise and precise my topic on the eyes of a performer, because I am thankful to Dr. Gaurav Das, who has invited me among the dignitaries and luminaries of literature to whom I feel that I am standing and moving before a library. So I am getting aware about my knowledge and consciousness on the Manoranjan's literature. While preparing such a subject, if I stand, I will be in a folded feet, because the actors without a script is unable to present itself. But I have a script, but certainly I will not get any chance somewhere to read it. This is the befitting occasion. I hope precisely I will start to read it. Manoranjan Das, the hologram of Odia theatre, the emblem of existence of our theatre literature. If Das could have been completed a century on this earth this year, if he lived, starting from pre-independence to the post-modernism of Indian literature, he has eyewitness ups and downs of Odisha's social structure, uplifts and depletion of moral values, as well as watersheds in politics, which are reflected in his plays from the beginning. Initially, he wrote for professional theatres, and later to hone his art of well-made plays and to learn the conventional structure of the stage plays that were meant to be performed before the huge mass of theatre goers. In latter part of his career, he attempted different forms and styles of the play writing that broke away with the tradition and involved with the elite class of audience who loved to share theatre with an intellectual approach. What the Vice President of the Academy was highlighting this. So, in 1960s, the formation of the Sujani, Navanatya and Dolono, it will be all repetitive. I was assigned the topic, that impact of European theatre on Manoranjan's play. While I was going through, I have come across in the post-colonial time, I was discussing with Professor Satyavrat Rao, that the root movements of the theatre was continued to decolonize the Indian theatre in the post-1960s. Indian theatre has also projected with conglomeration of two different cultures, East and West. Similarly, not only drama, but also other forms of creative literature like poetry, stories and novels have also engulfed with Western thoughts with Indian text and vocabulary. Even in the practice and performance of the theatre by the senior thespians of our country, tried to harmonize between Indian and traditional Western style of presentation. As the Indian form of presentation was suppressed in the colonial period by the so-called elite class, considering it as a crude form of art, the post-colonial period playwrights and directors in the national phenomenon has exercised to present a perfect blend of Indian tradition with Western form to decolonialize the Indian theatre. It is also impacted in the Indian writers of the play, which can be noticed in the works of playwrights like Bhavan,
Mohan Rakesh, our learned speaker, was telling Vijay Tendulkar, Girish Karnad, Chandrasekhar Kambar, Habib Tanvir and many more. Today morning we are discussing that before writing Hayavada, Manoranjan was much before it was written in the Odia script. The theatre directors like B.B. Karan, B. Jayashree, K. M. Panikar, Neelam Singh Chaudhary, Banshi Kaur, Ibrahim Algaji and others had also started to develop relationship between performers and the spectators, which form a unique blend and an integral part of the Indian folk tradition to challenge the colonial theatre. That was the practice, and they have started to blend a folk theatre, which we are discussing about Nandika Kesari and how Manoranjan Das has dealt it swiftly. Why I narrated these descriptions? To project the pan-Indian scenario in the post-1960s, both in playwriting and theatre practice. I am telling about the practice has also been influenced, and this type of top spearers and the forerunners of the directors, those who have started to decolonialize by engulfing the folk traditions of India in the theatre, which will give a link to discuss the concept of Manoranjan's Odia play during that period. Odia play in post-1960s took a different form, where experimental and conceptual thoughts were reflected in playwriting, where remarkable change was visible in crafting the plots and characters. And many people have discussed about Sagar Manthana, Akademi, Manoranjan and his post-60s writing for the professional, and I will not go through the details. In take it simple, it can be summarized that the demand for such modern plays has created a new zeal in Manoranjan to venture the incorporation of new idioms in modern Odia play after 1960s, in the post-colonial era of Orissa. He has tried to free the style of conventional theatre drama and concept of Odia play. Though in the latter past, some writers commented these plays as absurd, but these plays of Manoranjan are conceptually rich and loaded with contemporary thoughts. And our erudite Vice President, the learned speaker, was telling, the नाटक कोई विचारशील लोग के लिए लिखा जाता है. They are vibrant and with well new experimental in style and presentation. This can be compared with the other plays of national scenario in the post-colonial period, as I discussed about the playwrights earlier. As a performer, impact of European theatre, as a performer and director, my perspective on the plays of Manoranjan is little different. Though to analyze and assess the total contribution of a colossal personality is very difficult within a short span, still I will try to sketch my points through one or two plays that will dwell on the theme of impact of European theatre on India. As years rolled on, it is proved that Manoranjan was right. He observed the popularity of conventional plays are not long-lasting. Hence, he tried to align himself with the taste of modern age and urged to tell new things in a new mode, as the international dramatic awareness has gradually impacted in his mind. Many people say these are the absurd plays. In the post-World War II European plays has a different characteristics. Absurd in thoughts and dialogues, incoherent dialogue, hero and monologue. Only two characters they might be interacting, but sometimes it resounds incoherent. Plots are very minimal. They don't deal with the conventional mode of play like a plot, structure and dramatical climax, Natya Utkantha. And sometimes where the drama doesn't end with a proper resolution of the conflict. These are called the avant-garde of plays. The unreliable characters and narrators are introduced, and avant-garde modes of performance are put into practice. Lastly, the Brechtian or the European theatre can be conclusively summarized, if I am not wrong, by mentioning that the empathy and bondage between a spectator and a stage is deliberately being shattered and broken.
and the problems of the life is never being looked like more emotionally. It looks like more critical. So these differences between avant-garde and conventional plays. Similarly, initially he was influenced with Western psychological plays and problem plays. It has emphasized discovery of irrational parts of life without attempting to create conflicts and suspense, and it fails to the hints of reason. So his plays, Banahansi, Kathagoda and Arunefashala, are three remarkable, notable plays, you can say, on my topic which I cover. But I will not go for all the details. I will only choose one play, that is Kathagoda, which I like most. As a performer and theatre director, most remarkable play which has touched me is Kathagoda, the Wooden Horse. With the joining of some separate platform was created before the audience, and theatre is not only for the mass, it is for the classroom. An article, I have quoted it from Professor Tilochan Mishra in a souvenir of Tutkal University, can be cited as Professor Mishra has commented, Harvard Pinter's The Homecoming and Das Kathagoda, the former's betrayal and the latter's Klanta Prajapati, though fairly suggestive of each other, are apart as two plays can be. Dr. Chittaranjan Mishra, who is a research scholar on Harvard Pinter, he has also translated 2-3 plays of Harvard Pinter. A poet and a research scholar, he has written in one article of Manoranjan and Printer, exploring comparative perspectives as like Saraj Kaur, Manoranjan and Bhavan narrates that Manoranjan's Kathagoda draws attention to Printer's The Lovers. He has translated it to Priyatama. Not because of their appearance, but nearness in terms of theme and structure. But later Manoranjan has confirmed that he had neither gone through the text of The Lover, nor he has watched its performance before he was writing Kathagoda. However, the semblance can be noted as a post-colonial impact in our cultural practice, including playwriting. The voice of the play Kathagoda is not taken like a social conflict or usual plot, what we see in traditional form of play. Rather, it portrays the psychoanalysis of human mind and behavior. There are only two characters, and they appear for another two characters. Pitambar and Arun are one person. Similarly, Deepa and Sikha are one woman. Only the director appears as a character to bridge the gap, to introduce the artist, to evaluate the reaction of the player as well as the audience. Marriage is an institution in our cult and culture. But after marriage, the monotonous progress of conjugal life makes the human as like a wooden horse. The feeling inertia, prototypical behavior within the couple, psychological dormancy turn the life into a wooden horse. The theme is dealt by the author swiftly using the image of a wooden horse. In the phase of conjugal life, sometimes the husband tortures on the wife and vice versa. The tortures are often more psychological, rather more physical. More intimacy and interferences in each other's independency, leading towards mental torture and agony. While the repetition of such feelings persists, the character want to depart themselves and exit from an institutional bondage, which is not possible in their part. The social system and boundary of the tradition is so strong that it doesn't allow to free them from the chains. Hence, life became more miserable. The play is marked as a blending of fantasy and reality. The measurable rituals of wish fulfillment in the life of a couple are threatened by a sense of monotony. In the play Kathagoda, Manoranjan amplifies the inertia and sense of rigidity and non-fulfillment between a man and his wife. Similarly,
The use of traditional folk forms elements increases the grandeur of the play. Though the critics alluded to a play like The Lovers of Hallowed Winter, but it is a separate structural presentation altogether. The director of the play appears in between the characters, and to break the monotony and bondage of stage and audience, what I was narrating, what is the formation of a European theatre. Sometimes the director compels to confess the audience to utter the truth. आपण माने सत्य कहूँ आपण माने मिछ कहूँ नहीं. I don't tell lie. I don't pretend. मु मिछ कहेनी, मु छलना करेनी. The director will appear on the stage and it will compel to tell you the audience the usual happenings in a Brechtian theatre. The melodious rhythm in the style of Gitinatyam, a known folk form, has also been deployed in the dialogue by the characters as well as by the director. Allegorically, the dialogues also appears in between the characters and sometimes narrated by the actors. Though in the style of presentation of character Pitambara and Arul, as well as Deepa and Sikha are the same person, but changing their settings and makeups differentiate both the character where they transform into a couple of lovers and trying to set their habitual selves as a traditional husband and wife. The presence of the director relates to the play to the tradition of Indian scriptural wisdom pronounced as such fantasies. On the contrary, the printer's play, The Lovers, which was translated, I was telling my Professor Mishra, the counterpart of Pitambara and Deepa are Richard and Saras, who are being lovers to draw minimal sexual excitement through impersonation. Even though they know that they have mutually arranged this game of fantasy and trying to project alternate selves, people enter to fulfill their intimate wishes. I have an audio presentation of play Kathogoda, a small audio presentation. I will not take much time. Namaskar. This is a audio presentation of the play Kathogoda by the legendary playwright Manoranjan. Shorucha, Deepa, eita kon? Kon? Ghara, eita ghara. Ghara na drawing room? Na, ghoda sala, asta hol. Thao, band kar. Jani jo office ki jauchi. Aji to rosei saribare deri karini. Aji mor bhagyo adhaganta agu khai deichi. ताहेले ते तत्तर ही चली जाउछ काहेकि बसी जा टिके विश्राम कर 60टा निश्वास हां घोड़ा दौड़ा करू मु कोन कहथली कि शांतना संवेदना स्त्री राधा आउटे रुमालाडी देबे घोड़ा दौड़ा करू घोड़ा मु देखि गले कोन पे जानि छ काठगोड़ा आरो घरे रखि देई आसुछि ए घर को आनि थलो काहेकि से घरे पड़ी मळी धुली रे आउ ए घरे आसी सफा सुतरा करी ड्राइंग रूम टा तुमर रुचि बहुत अछि मोर नाही से कथा तो मु कहूनी ताले कहउछ कोन मु किछि कहूनी किंतु मु कहउछ मु इच्छा करी आको स्टोर रूम रे आनी एठी रख करते मु मना करिनी मना करनी कि काम देखि दो कोन तमर रुचि बेसी मोर को तुमे एठी आनी ड्राइंग रूम टा भलरे सजाई दो किंतु गत वर्ष तो तुमे ए घोड़ाटा आनी थिलो ड्राइंग रूम सजाड़ी बाबाई होय काहे के आनी थिलो मते किछि कहि न थिलो तुम पेटरे जो पिलाटा थिला जन्म करथले से खेल खांता आउ सब को से कथा मने पकाना मने पकेली मु ना तमे हां मु घोड़ा बाहर करनी तुमे से पिला को मारी देलो दीपा तुमे नुहे आउ किए मु जान नथले से पिला मरि जिवो मु बराबर कहउतिली कोन कहउतलो मु काठा घोड़ा नुहे दीपा कहना काहे की हमु फल कोन हैला मु केमि जानथले से पिला मरि जाई पारे मु जानिथिली मिछ मु बराबर मना करूथिली मोर कोन से अभिज्ञता नथला किंतु मते जे बराबर कष्ट होउथिला कोन कहबे चाहछ
ପିଲା ମରିଗଲା ତୁମରି ପାଇଁ। ଦୀପା ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ କଣ କରିବି? ମୁଁ କାଠ ବୁଣା କରେ। ଆଉ କଣ ମୁଁ? ବେଳେ ବେଳେ। ନା। କିନ୍ତୁ କଣ? କାଠ ବୁଣା ଅଚଳ ନିର୍ଜୀବ। ମୁଁ କଣ ତାହେଲେ? ପ୍ରତିବାଦ କର ନା। ପ୍ରତିବାଦ? ମାନେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ବେଗବାନ। ମୋ ପରି ତୁମ ପରି ସ୍ପିଡ ଦୌଡ଼ିବା ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ଘୋଡ଼ାର କଥା। ତୁମେ ଦୌଡ଼ ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଦୌଡ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ମୋ କଷ୍ଟ ହିଁ ତୁମର ଆନନ୍ଦ। ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଛ। ହଁ ବୁଝିଛି, ନହେଲେ ସିଏ ପିଲା ମରିଥାନ୍ତା କିପରି? ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ। ନା ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ନା ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ନା ନା ନୁହେଁ କୁହ ହଁ। ନା ହଁ କୁହ। ମିଛ। ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତୁମର ଆନନ୍ଦ। ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତୁମର ଆନନ୍ଦ। ହଁ କାହିଁକି? କଷ୍ଟରୁ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରୁ ସତ୍ୟ। କୋଉ ସତ୍ୟ? ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଗୋପନ କରି ରଖାଯାଏ। ମୁଁ କିଛି ଗୋପନ କରିନି। ତାହେଲେ କହୁନ କାହିଁକି? କହିଲି କିଛି ଗୋପନ କରି ରଖିନି। ରଖିନା? ନା। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରୀକ୍ଷା? ଅଭିନୟ ଥାଉ। ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁନି। ମୋ ହାତରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଅଫିସ ବେଳ ହେଇଯାଉଛି। ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଫେରିବ? ସେ କଥା ପରେ। କାହା ପରେ? ପ୍ରଥମ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଥଡିକାଲ। କାଲି ପରେ? କାଲି ପରେ ତା ଆଗ ଦିନ ପରେ? ତା ଆଗ ଦିନ ପରେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମରେ? ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ। ସବୁଦିନେ ସେଇ ନିୟମ? ଆମେ ନିୟମର ଦାସ। ତାହେଲେ ଏବେ? ହଁ ଏବେ। ନା ନା ଥାଉ। କହିଲି ତ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି। ତାହେଲେ? ଅଯଥା ଡେରି କର ନା। ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନଥିଲି। ତୁମେ ଦୌଡ଼ିପାର ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ବେଗବାନ। ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେସବୁ ଏବେ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଚମତ୍କାର। କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସ। ଝରକା ଗୁଡ଼ା? ଥାଉ ପବନ ଟିକେ। ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋର ପଡ଼ିପାରେ। ତାହେଲେ ଥାଉ। ଚାବୁ ଦଉଛି। ବସିବ ନା ଠିଆ ହବ? ଶୋଇଲେ କମ୍ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ତାହେଲେ ଶୁଅ। ନାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ମୋର ଶେଷ ହେଇନି। ଆଉ କହିଲି ଶେଷ ହେଇନି। ଏତେ ଜୋରରେ କଥା ହୁଅନା, କିଏ ଶୁଣିଥିବ? କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। ବାଜେ କଥା ଛାଡ଼। ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବଣି। ହଉ କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହବ। ନା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଛିଡ଼ା ହବ। ଛିଡ଼ା ହବ। ହଁ ଏମିତି 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 ଛିଡ଼ା ହବ। ଛିଡ଼ା ହବ। ପାଣି 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 ପାଣି। This is one voice when both the characters are in husband and wife. They have another settings also while they enter into a camouflage stage of lover and beloved. But I hope this audio may not be possible. I was browsing the antecedents of Mr. Manoranjan Das, who has spent a good number of plastic days at Pujam due to his professional assignments. I am from Paradip, the near place of Pujam. And the Pujam is a place near to that is a Mahanadi, the river, greatest river of Odisha and Bay of Bengal, where he has nurtured his ideas and probably he has learned a great from the environment of Pujam, where his father's professional assignment was there. The symposium will certainly excite an opportunity for the performers and directors like me to motivate and encourage on the works of Manoranjan and to compile the ideas as well as to restore for the young generation. No doubt Manoranjan hails from an affluent family, highly educated, placed in a dignified position in All India Radio, which has some of his intellectual ingredients and conducive atmosphere for the cause of his rich creativity. His plays are translated in many Indian languages.
on the bar centenary of this platform, I may request all erudite personality of Sahitya Akademi, from Sangeet Natak Academy, our Odisha Sangeet Natak Academy, Prabhat Babu is there, and from the National School of Drama, Mr. Mahdi was here, to initiate an action for Manoranjan retrospective or Manoranjan theatre festival, which will be an opportunity for the young generation theatre practitioners to encourage in discovering the essence of Manoranjan literature as well as translating into stage reality. Thank you. Thank you very much. Thank you particularly for bringing back technology in the presentation of a theatre connected paper. Sometimes, recently in a seminar away from Delhi, I was chairing a session on electronic literature, and there was no PPT presentation of those facilities. And the experts, I had 4 experts who were talking to. So they asked me, how do we communicate electronic literature without any electronic visuals anywhere? Can it be communicated through words only? So sometimes we face such situations. But you have brought it a little bit of maybe flavor in the seminar by presenting this audio clipping. Thank you very much. I'm sure we are running short of time. I don't think there is any time for question answer anymore. No. So I would just like to share with the audience an information that just as Manoranjan Babu, as Mr. Sriman Mishra told us, Manoranjan Babu said that he had not read Predator, Lovers of Picture, right? But yet there was a lot of similarities there. So I remember a parallel story. In Tagore wrote a very famous play called Rakta, and Rakta was made almost immortal by Shambhu Mitra in his presentation. And an accusation arose that there was a similar play called Red Oleander by Strindberg, and whether Tagore has actually taken it from there. So when Tagore was accosted with this information, he said, I might have taken it from there, but let me see the book, let me read the book first. Only after that I will tell you. Then the book was provided to him, the Strindberg's Red Oleander. He read it and he said, yes, there is a lot of similarity. But I can't help it, because I have never read this book. I have never even heard of it. So this is a kind of creative affinity which travels from time to time, from both time and space, sometimes. So I think Manoranjan Babu's example is also a very interesting example in that aspect. So it remains for me only to thank my panelists for a very interesting session, and I would like to hand over to Krishna Bhavan for the rest. Well, the session went on very well. Hearty thanks to the chair, Nepal, Professor Jatin Kumar Nayanji, Shri Ajay Patnaikji, and Shri Manoranjan. We will now have a lunch break and get back right at 45 for the second and the last.